everyone, welcome back to my channel. My name is Juhi and today I'm back with another self-portrait tutorial. Thank you so much for showing so much of love to my previous self-portrait tutorial. I hope you like this video too, and if you haven't checked the previous video, I will add all the links in my description box, so do check that videos also after watching this video. So without any further delay, let's dive into the video. Oh wait, have you subscribed to my channel yet? If not, then do subscribe to my channel now and press the bell icon so that you will never forget any videos of mine. Now, let's dive into the video. For the first portrait photo shoot, we are going to do indoor. और मैंने पूरा ड्रेसअप किया है, बंजारा लुक लिया है मैंने राइट नाउ, और सेटअप भी रेडी है. लेट मी शो यू द सेटअप राइट नाउ एंड दिस इज़ व्हाट द सेटअप लुक्स लाइक. ऑलराइट, ये प्लान मेरा आउटडोर का था, मतलब मैं टेरेस पे करने वाली थी, बट अभी मौसम बहुत ज़्यादा बारिश जैसा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि घर पे ही सेटअप किया जाए. तो ये सेटअप है, मैंने वहाँ पर पिन्स उससे अटैच किया है, और दिस इज़ व्हाट सेटअप. वेट, लेट मी शो यू इन अ प्रॉपर वे. दिस इज़ द सेटअप. गेस व्हाट, बारिश भी शुरू हो गई है. आई होप आई टेक सम गुड फोटोज़ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. बाय बाय. For the second portrait photo shoot, we are going to do in the car. For the third photo shoot, we are going to create the background, and to create the background I'm going to use वो बर्थडे वाले झालर जो होते हैं ना, हम वो लगाने वाले हैं पीछे, वो गोल्डन और सिल्वर कलर के जो आते हैं, तो हम उससे पूरा अपना बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे. So we have created the background, but अभी हवा बहुत चल रही है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा. So I just found this tire, so let's use this tire as a prop, and we are going to take this. Oh shit, ये बहुत heavy है.
this video. Hope you guys enjoyed this video and found this video very useful. Give this video a big fat thumbs up if you like it, and comment down below if you want such more videos. And don't forget to subscribe to my channel now and press the bell icon so that you will never forget any videos of mine. I will see you in the next video. Bye bye.